यस। खड़े होता भाई। अरे वो हो जाएगा, वो तुम समझ लो, बोलते रहो थोड़ा थोड़ा। हाँ, so what I am doing, sir. यार नहीं, जो नहीं समझ में आएगा वो हो जाएगा इसमें रिकॉर्डिंग। कैमरा ही बहुत अच्छा है। अरे ठीक है, जो भी है वो हो जाएगा। सही बात। So here I am pasting the flow.v file. Okay. So this is already again defined in the PDK. Okay. So tick time scale 1ns by 10 ps. So this we have to define in our test bench. Okay. Test bench we have here tick time scale we have to define. वो जो 1 नैनो सेकंड था वो डिले टाइम था क्या? 1 नैनो सेकंड वो उसका क्या मतलब है वो? ये रन बेसिकली टाइम स्केल डायरेक्टिव है, जो आपका जो ये प्रिसीजन है 10 पिकोसेकंड्स और इट विल चेंज टू नैनो सेकंड। ओके ओके। तो ये डायरेक्टिव है जो डिफाइंड है ऑलरेडी। और ये देखिए यहाँ पर आपके डिले पैरामीटर। ओके, तो ये फाइल ज़रूरत पड़ती है वो बैक एनोटेशन के लिए, क्योंकि इसमें ना डिले पैरामीटर्स भी रहते हैं। ठीक है। तो टाइम स्केल कॉपी एंड आई विल जस्ट पेस्ट इट हियर। Save दिख this. रहा है मुझे, लाइट कम है। Now here I will open the your NC launch or Xilium also you can use. So I will launch the NCSIP tool here. Okay, NC launch space hyphen new. Then select here multiple step and here no need to इनोस को बंद कर देना है। आपके उसमें शायद वो नहीं होगा क्योंकि स्लो डॉट वी फाइल नहीं एक्सेस कर पाओगे ना वो वाले सिस्टम से। कॉपी ठीक कर है। सकते हो उधर से हाथ से यहाँ पर, तो डायरेक्टरी में रखी हुई है, स्लो डॉट भी डायरेक्टरी में है हमारे। तो उधर पे कॉपी कर लीजिए आपके सिस्टम पे, वो काउंटर 4 बिट डायरेक्टरी में। उसमें कॉपी कर। हाँ कर लीजिए। So here you have to compile. Okay, then at least slow.v. Then you can see one clip will be created. Here you have to go for the elaboration. So take time scale directive missing on one or more modules. So I think I have to give to all the modules the time scale directive. Netlist also. Okay, so again I will do complete compilation. Then okay, select on counter underscore test, then snapshots will be generated. सर उसके अक्सर स्लो डॉट भी हमने इसमें डाल दी है। उसके बाद टेक टाइम स्केल 1 ओपन कर सकते हैं क्या वो फाइल को? नहीं, स्लो डॉट वी को टेक्स्ट एडिटर से राइट क्लिक ओपन विद डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है ना। सिमुलेशन रिजल्ट्स विल बी सेम। ओके। So if you zoom out, हाँ okay. then? So this is your post layout simulation result. Done. Where you have to add the delay values. Like you can see these are the different. सर उसके बाद में टेक्स्ट एडिटर में क्या करना है उसे? Then I will just repeat it. You can record it. Okay, once. So once you have to paste the slow.v file. Okay, slow.v file, paste it in the counter 4 bit. Copy this first line, take time scale. Right click, copy. Paste to all your files like take time scale that test bench file.
counter dot v file. Where is counter dot v? Counter dot v file. Counter dot v. Here also, and slow dot v will be that tick time scale will be copied to counter underscore test dot v, counter dot v, and netlist dot v also. Netlist dot v. See here. Okay, so here you can see. Also, actually, you can generate the netlist file from here also. Innovus also, you can generate the netlist file like here also netlist file you can generate. So this also you can use it. Okay, almost it will be similar only. So I have done with the genus. Okay, only some this will be same actually. I will show you how how the netlist file of the from the Innovus will look like. So counter underscore netlist 1.v. Press on OK. So it will be generated here. Counter underscore right click, open with text editor. So like this. This is with Innovus, but internally it is generated by genus only. You can see here. Done, sir. Done. So then Sir, Add all test. counter.v, counter netlist.v or counter test.v. हाँ तीनों में रहता है. हाँ take time scale. Then save this. Save all the 3 files. In the same the terminal, open the incisive tool, that is nc launch space -new. So we have to turn off that Innovus first. Both you can invoke. If you want, you can close it, because if a lot of windows gets opened, then so that's why you can close it in OS. So you can see the counter this. बस का timing 100 500. But हुआ आगे क्या है इसके बाद counter underscore netlist 1.v. So this is with Innovus, but internally it will be generated by Genius. You can see only this difference I think is there. In counter underscore netlist.v, if you see, okay, it doesn't have those internal wires. भैया This is not there. नेक्स्ट स्टेप क्या है So after that you have to open the incisive tool. I'll just do it here again. Okay, I'll close the NC launch again once. So right click, open in terminal, then CSH, and I'm sourcing the CSHRC file nc launch space -new. Hyphen new करके नहीं कर रहा सर. विदाउट उसके चल जाएगा, कोई इशू नहीं है. अब न्यू में वो वापस से CDS वो ठीक है कोई इशू नहीं है, वो किया ऑलमोस्ट. न्यू में आप वापस से cds.lib फाइल और सब कर सकते हैं. सो देन हियर counter.v compile, counter underscore netlist.v compile, counter underscore test.v compile, slow.v compile. Here I'm not compiling this because in this time scale has not been added. Okay, then multiple step, or all the files which are coming now with .v extension, you compile all the files. next Now go to worklib, and here you have to select your test bench, counter underscore test, right फिर and elaborate it. Now go to snapshots. Sir, please. हाँ After opening tool, what you need to do? हाँ After removing tool. all compile all the .v files, like you have counter.v, counter underscore netlist.v, counter underscore test.v, and slow.v. Compile करना है. Sir, सबको एक साथ compile कर सकते हैं. एक एक करके करिए. कर सकते हो वैसे एक से करके कंपाइल, ऐसा नहीं है. 10 मिनट और जल्दी करो. आगे compile आगे all, and here select on counter underscore test and select elaborate. Okay, Then- elaboration. हाँ. Then after doing that, snapshots will be generated. Okay,
So select on worklib.counter underscore test colon module that is the coming na. Press on launch simulator with current selection. देन So counter underscore test. हाँ Close this. हाँ. Counter underscore test and हाँ. select send to waveform window. हाँ देन आगे Was खत्म. then next step is to run the simulation. हाँ. So it's done खत्म. and you can just zoom out. ओके खत्म. Yeah, finish. और टेम्पस कैसे ओपन होगा बस ओपन करके दिखा दो.